Hello everyone. So I'm a biology faculty of XLX, and today we are going to discuss a chapter from your class 11's biology textbook, chapter 5, morphology of flowering plants. Okay, so this chapter comes under unit 2. This unit contains your 3 chapters: chapter 5, chapter 6, and chapter 7. Okay, the first chapter is morphology of flowering plants. So first we need to understand what is morphology, the meaning of morphology, and we also need to understand what is flowering plants. Most of us know about this flowering plants. The plants that contains flower, those are the flowering plants, isn't it? Now, what is morphology? Morphology बोलने से हमें क्या चीज मालूम पड़ेगा? So morphology is nothing but it is the external structure, or you can say the study of external structure. This is what? This is morphology. Okay? So हम लोग जो प्लांट है उस प्लांट के अंदर जो सेल्स है कैसे अरेंज है उन सब के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर एनाटॉमी. वो एनाटॉमी ऑफ योर प्लांट्स में आ जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी यानी जो आउटर स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे है. सो दोज थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर दिस चैप्टर. ओके, अगेन flowering plants, that means plants that contains flower or that have flower. हम जिनको एंजियोस्पर्म्स भी बोल सकते हैं. We can term this as एंजियोस्पर्म्स. तुम लोगों को क्लास 9 में ही शायद ये मिल चुका है that plants को हम लोग flowers present है या नहीं उस बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. One is angiosperms, that means the plants that have flower, and one is gymnosperm, the plants that does not contain your flower. Okay, now or you can say naked seeds. The seeds are naked in gymnosperms. Okay, but in case of flowering plants or angiosperms, the seed is covered with the fruit. हम यहाँ पे इस चैप्टर में जितने भी प्लांट्स को डिस्कस करेंगे all have flowers. Okay, now let's see what are the various things present in a flowering plant. Okay, सपोज एक नॉर्मल प्लांट हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो नॉर्मल चीजें, बेसिक थिंग्स आर देयर, वो हम लोग देखेंगे. सपोज दिस इज द सॉइल लेवल. तो अंडर दिस सॉइल, दिस इज व्हाट? दिस इज द रूट फ्रॉम वेयर वाटर इज बीइंग टेकन अप बाय द प्लांट. नॉर्मली दिस रूट सिस्टम प्रेजेंट beneath the ground, लेकिन जमीन के नीचे होता है. बट इन दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू नो वेरियस मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट आल्सो, जो जमीन के ऊपर यानी बिफोर योर अबव द ग्राउंड भी हो सकते हैं. ठीक है, तो रूट सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, नेक्स्ट अभी ग्राउंड के नॉर्मली जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट शूट सिस्टम. ठीक है, जो डिफरेंट ब्रांचेस होंगे, स्टेम्स होंगे, दैट कम्स अंडर दिस शूट सिस्टम. उसको हम लोग शूट सिस्टम बोलते हैं. ओके, तो हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में. फर्स्ट, नाउ देयर आर वेरियस थिंग्स प्रेजेंट इन दिस शूट सिस्टम, isn't it? There are leaves present, there are flowers present, because we are talking about the angiosperms, and your fruits are also present, isn't it? Stems present, these are your leaves. So various structures are present in this shoot system. Yes, we have talked about these angiosperms, so we have to draw a flower here also. Suppose this is the flower. Okay, because we will be studying the morphology of angiosperms. Okay, so these are flowers, they are also present. Okay, now after fertilization flowers से क्या होंगे? Fruits will be produced, isn't it? So थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके हम लोग यहाँ पे फ्रूट भी ड्रॉ कर लेते हैं. Okay, so flowers जो fertilization हो जाएंगे फ्लावर्स का, so वो ही फ्लावर्स बाद में क्या बन जाते हैं? फ्रूट बन जाते हैं. तो बाकी का पार्ट्स जो पेटल्स वगैरह होंगे वो सब शेड ऑफ हो जाएगा, वो सब गिर जाते हैं. ठीक है, सो सिर्फ क्या रहेगा तुम्हारा? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ओवरी था वही बाद में क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है. बट नॉट
इन ऑल केसेस हम वो भी देखेंगे कैसे कैसे फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी फ्रूट में हमें क्या मिलता है, सीड्स आर देयर, इन सम फ्रूट्स दे आर सीडलेस, व्हाई दे आर सीडलेस वी विल आल्सो स्टडी in this chapter. So this is suppose a fruit also. Okay. So in this chapter, morphology of flowering plants, we will be discussing about the roots first. Okay. And roots में भी क्या क्या different types होते हैं. Sometimes there is an taproot system and there is something called adventitious root system. So first we will discuss about roots. Okay. Now उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, we will discuss about the stem, various modifications of stems के बारे में डिस्कस करेंगे. After that leaves. अभी leaves में क्या होता है, क्या सभी leaves सेम होते हैं, उसमें कैसे वेनेशंस होते हैं. leaves में तुम लोग को veins दिखेंगे, वो veins में भी क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, compound leaf, simple leaf, we will see this. Okay. Next we will study about the flowers. There are different types of flowers, inflorescence of flowers. So these things will be covered under this chapter. Again, next, fruit. Fruits having seeds, fruits without seeds, how many different parts of a fruit. So these things will be covered. Again, next the seeds. Fruits के अंदर जो seeds होते हैं, हम वो seeds को भी देखेंगे. What are the various types of seeds? क्या सभी seeds एक जैसे होते हैं? And lastly, we will discuss some families. Families मतलब angiosperms families. Okay? Angiosperms के different families होते हैं. Liliaceae, Fabaceae, Solanaceae. So these families we will discuss. Okay? तो हम लोग जब भी मॉर्फोलॉजी बोलेंगे तभी ये सभी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाएंगे. ओके. तो रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, flowers, fruits, seeds and different families we will study in this chapter.